work with Ranveer Singh, and there's Deepika. Now you're going to tell me that no, we didn't do any scenes together. So I didn't get to see Deepika because we didn't have any scenes together. Right. But I did see Ranveer and also Irani, and obviously I worked with Kabir a lot, Yeah. so I saw him like all the time. All the time. Every day. Every day. Yeah. Yeah, but it's amazing how living in London, you can connect to all these different projects, which wouldn't have been possible were you in Pakistan. No. But then you came to Pakistan. Yes. And you did Dil Momin. Yes. And then there's the Marvel universe, and then there's Bollywood, and that's a biopic, and then there's Dil Momin, and then there's of course a lot of work in between. And you studied law. Yes. So your trajectory is like all over the place. Yeah. Right? I don't know if that's a good thing. It's a good thing. It's a good thing because I think you're being noticed, and it's so important for young women like you to get noticed, who have their thoughts straight. Yes. Taking us back a little bit, हम कोशिश करेंगे कि उर्दू में बात करें because, like you said before the interview, you are Pakistani and you do speak Urdu. Dil se Pakistani. Dil se Pakistani, yeah. And I want you to also share that incident कि दिल से कितना पाकिस्तानी घर बनाते हुए because that's interesting. But so first tell me how you got the role. For Spider-Man? Yeah, Zoha. Spider-Man बाहर जो है आपको रोल्स ऑडिशन से मिलते हैं. Right. होता क्या है कि जब आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन डिसाइड करती है कि हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए और फिर वो उन कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं एक्टर्स राइट बेसिकली, और वो एजेंसीज के पास जाते हैं कि हमें ये ब्रीफ है, ये बंदा चाहिए, ये बंदी चाहिए, अगर आपकी एजेंसी में आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें बताएं. तो एजेंसीज जो हैं वो प्रोफाइल्स भेज देते हैं. तो मेरी एजेंसी ने प्रोफाइल भेजी जो जॉन वॉट्स जो डायरेक्ट कर रहे थे स्पाइडरमैन. राइट, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा पीछे जाऊंगी. आप एजेंसी के साथ यू वर साइंड अप बिकॉज़ यू वर ऑलरेडी मॉडलिंग फॉर कमर्शियल्स. जी, ये मेरी मॉडलिंग एजेंसी थी. राइट. मैंने एक्टिंग एजेंसी अभी तक नहीं ली थी. राइट. बट वहाँ पे मॉडलिंग एजेंसीज वो एक्टिंग भी आपको दे कैन पुट यू फॉरवर्ड फॉर एक्टिंग स्टफ एज वेल. राइट. तो उनके थ्रू उन्होंने मेरी प्रोफाइल भेजी मार्वल को, Marvel/Sony. And at that time you didn't know your profile was going to Marvel. No. उस वक्त आपको कुछ नहीं पता होता. Along with I'm sure like 1,000 other profiles, क्योंकि काफ़ी सारी एजेंसीज हैं और ये वर्ल्ड वाइड ऑडिशंस थे. और उनको मेरी प्रोफाइल पसंद आ गई एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर एन ऑडिशन. तो उन्होंने फिर मुझे पहले NDA भेजा. तब मुझे पता, जब NDA भेजने तो आपको पता होता है कि कुछ बड़ी चीज़ है. उसके बाद मुझे ऑडिशन के लिए इनवाइट किया गया एंड आई वेंट इन फॉर द ऑडिशन. Where was it? In London. Yeah. And उस वक्त I wasn't sure कि किसके लिए है, लेकिन मुझे पता था कि काफ़ी बड़ी चीज़ है. तो NDA साइन करने के बाद बैठे हुए उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी एंड कहा कि बस आप जब रेडी हो बता दें. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी उसमें लिखा, उसमें एक लाइन थी which was what's Spider-Man doing in London? And I was like, oh, okay, this is not the time to get nervous. Just breathe and go with it. Because I mean, I'm sure आपको भी पता होगा, पाकिस्तान में Spider-Man is a huge thing. हम बचपन से देखते आ रहे हैं. I think of all the superheroes, Spider-Man हमने सबसे ज़्यादा देखा है. Spider-Man and Batman. It's always, you know, Tobey Maguire की, Andrew Garfield की, हमने सबकी देखी है. So it was a huge thing. But उस वक्त I sort of forgot कि किस चीज़ का है. मैंने अपने आप को भुला दिया. And I was like, lines पे focus करो और बस ऑडिशन दो. मैंने बस ऑडिशन दिया और मैं निकली और मेरे लिए था कि इवन ऑडिशन करना वाज अ बिग ऑनर फॉर मी. ऑफ कोर्स यार मुझे मार्वल ने ऑडिशन के लिए बुलाया है. मैं बहुत खुश थी. निकली है, मैंने कहा चलो मिलेगा नहीं मिलेगा देख लेते हैं, प्रॉब्ली नहीं मिलेगा. 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आ गया प्रोड्यूसर से कि या वी रियली लाइक्ड यू और 1-2 सवाल हैं एंड देन वी आर गुड टू गो. आपके एजेंट से बात हो रही है. एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट. सो इट वाज स्टिल वाजंट कंफर्म्ड. सो आई वाज very controlling myself. कुछ नहीं है, किसी को नहीं बता रही थी. कुछ नहीं हो रहा. और फिर उसके फर्दर 2 दिन के बाद मुझे फिर से फ़ोन आया कि नो वी वुड लव टू हैव यू, बट एक सवाल है कि आर यू कंफर्टेबल वेयरिंग द हिजाब. राइट. अगर आप नहीं भी पहनती हैं तो इट्स टोटली फाइन बिकॉज यू आर व्हाट वी वुड लाइक टू हैव इन आवर क्लासरूम. बिकॉज जॉन वॉट्स को चाहिए थी एक न्यूयॉर्क क्लासरूम जो कि ट्रूली डाइवर्स और जो बाकी न्यूयॉर्क में जो हाई स्कूल्स होते हैं उसमें हर किस्म के लोग होते हैं. Absolutely. And John Watts being the director. Yes, John Watts being the director of Spider-Man. So they gave me an option, and I thought about it,
तो उन्होंने कहा था कि अगर आप हिजाब में करना चाहेंगी प्लीज़ आप हिजाब पहन के कुछ तस्वीरें भेज दें ताकि हम देख सकें. I spoke to my agent and I was like, look, I feel like if I do it in a hijab, it will be a big responsibility. Yeah. And I'm willing to take it on because I think that I will do my best to do it justice. तो मैंने अपनी अम्मी का दुपट्टा लिया और पहना और मैंने पिक्चर्स भेज दी. उस वक्त अम्मी को पता था कि किस चीज़ के लिए पिक्चर्स हो रही हैं? नहीं उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया. Because NDA साइन हुआ था, was very like कुछ भी हो सकता है. उस वक्त मतलब जब इतनी बड़ी कंपनी आपसे NDA साइन कराती है आपको बहुत खौफ होता है. Also a law student, I know the the legalities of it, so I was like no, I will respect this NDA. I'm not going to tell anyone. उस वक्त I was talking to my husband, so I knew him. We weren't married, but I didn't know him, and I told him, only him. And he was like, yeah, just take on, it's fine. He's my rock. He's always been my rock. And I remember we were going to zip lining in London. Okay. It was summer. And I was entering the train station. जो gates नहीं होते, आप tap करते हैं, gates खुलते हैं. मैं जाने वाली थी तो my phone rang. And I was like, पता नहीं, unknown number है. Usually मैं unknown number उठाती भी नहीं. And I picked it up and it was the producer. And they were like, we would love to have you in a hijab. And हमारी fittings जो हैं वो परसों होंगी. Please tell me if you're available and we'll send the car to pick you up. And you were going ziplining. And I was going ziplining. And I kid you not, there was a wall. जिसके I was standing against it. I literally just slid to the floor in the middle of this Canary Wharf station. Yeah. जहाँ पे इतना rush होता है. And I was just sitting on the floor and I was like, what just happened? Because for me, I had never studied acting. For me, it was always a hobby. Right. It was a passion. Right. But जब आप पाकिस्तानी parents के साथ बड़े होते हैं, creative जो spheres होते हैं, creative careers होते हैं, उनकी तरफ आपको encourage नहीं किया जाता. तो आपको बस एक hobby के तौर पे ही रखना पड़ता है उसको. आप कभी उसको progress नहीं कर सकते. कर सकते हैं, obviously, but it doesn't feel realistic. Right. It never feels realistic. And that's how I got Spider-Man. It never seems like it could be a career. Exactly. It never feels like it. It always feels like a dream. A dream, yeah. It never feels like something real. Like, oh, हाँ, मैं भी red carpet पे Hollywood पे चल सकती हूँ. कितने लोग सोचते होंगे कि I would love to do that. Yeah. But to actually be able to do it. And you did it. I know And you looked amazing. On the red carpet, yeah. So, you know, it was quite literally a dream come true. And how long was the filming? How long did it last? हमने filming की कोई 4 महीने. ये भी एक और story है within the story कि मुझे लगा था कि मेरा एक scene का character होगा क्योंकि जो audition था वो एक scene का था. Right. जिस तरह Superman में वो बंदी नहीं होती क्या? Oh, is it a bird? Is it a plane? Oh, yeah, it's Superman, yeah. That's what I thought my character was. Just a line. Right. And like one scene. Right. But when I got the contract, it was filming for 14 plus weeks. And I was like, okay, interesting. I didn't realize it would be that long, but I was free. Yeah. I was like, okay, fine. And even if you weren't free, you would make time for this. Even if I wasn't free, I would make myself free. Yeah.